Hello and welcome to the economic session with me, Rupanshi Kalra. Let me just introduce myself briefly. I am 23 years old and I have my post graduation degree in economics from Punjab University, Chandigarh. So I have been working for 2 years now. I have been in this profession for 2 years. Earlier, I used to give private tuitions, and now I am currently working with Planet Spark as a mentor. Okay, so I had an eye for economics when I was in 11th standard because I really liked to learn the all right to know more about the policies, the economy, how does it work. So that's why I opted for the subject as economics. Okay, so now here I have a plan with me which is 50 to 100 hour plan. It is of 12th standard. It has covered both micro and macro. So let me just give you what is it. Uh, Micro it will take 31 to 35 hours, and macro it will take 43 to 45 hours approximately. All right. So micro is bit smaller than as compared to the macro part. So micro chapter 1 is a basic introduction of what is micro, what is problem of choice. So it will take 2 hours, and then we'll give 1 hour to questions and 1 hour to test. All right. Then comes the chapter 2, which is of 5 hours. It is an important chapter because it covers utility, indifference curves, and everything. And the question from indifference curves mostly comes. So it will take 5 hours, and after we've covered that, it will have the question session and the tests. Okay. Then comes the chapter 3, which is of 6 hours. It is also a bit detailed one because it has revenue, cost in it. So it will be explained thoroughly. So it will take 6 hours, and then 1 hour for questions and 1 hour for test. Then is chapter 4, 5 hours, because it has all the markets in it, which is monopoly, perfect competition, monopolistic, oligopoly. Everything is explained, and their curves, their shifts are explained in detail. So it will take 5 hours, and then we'll have the question session, and then we'll have the test session. All right. Here, this was the last chapter of micro, the fourth one. Now comes the macro part. Macro is much more important because it has one of the important chapters, which is national income, and a numerical question from national income mostly comes. It is always there. Whenever I have seen the paper, it is always there. Okay, and it is a bit lengthier, so it will take time to complete that chapter. It will take 13 hours to complete that chapter because it has the concepts of national income, the formulas. It has three different methods to explain value added, expenditure, income method, and their numericals, GDP. Everything is explained in this chapter. Okay, so after the completion of national income, we'll give 2 hours to numericals separately. All right, we'll cover all the numericals in those 2 hours, and then we'll have the test. Okay, then we have is chapter 6, which is an easy chapter but an important one, which has money, central bank, commercial banks functions, credit creation. All right, so it will take 4 hours. Okay, then chapter 7 will take 6 hours because it has investment multiplier, consumption function, saving function, okay, demand and employment and everything. Okay, then comes chapter 8, 4 hours. It is quite an easy chapter. Budget, sources, expenditure. Okay, then comes chapter 9, which is of 5 hours. Balance of trade, balance of payment, okay, foreign exchange rate, okay, depreciation. So it is also quite an easy chapter for to learn to do that. All right, and the same procedure continues. After every chapter, we'll have 1 hour for question and 1 hour for test. Okay, after completing these, we have a pretty decent time to revise. All right, so it will take 10 to 9 hours for revision.
So one chapter, one chapter, 1 hour, and after that we'll be doing the sample papers and the thing. Okay. Now let us start the topic quickly. So the topic today is credit creation. What is credit creation? Credit creation is one of the most important works that commercial banks do. Alright. Credit means udhar and creation means banana. Alright. Credit create करना मतलब उधार बनाना. Okay. So suppose I have 10,000. ठीक है, मैंने वो बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं. तो बैंक उस 10,000 का कुछ पार्ट रिजर्व रखेगा एज कैप्ट एज अ रिजर्व फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, एंड बाकी का अमाउंट लोन आउट कर देगा, एंड उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी क्रिएटेड एज अ क्रेडिट. दैट मार्केट में मनी सप्लाई कैसे चलेगा, वो ऐसे इस पर्पज से चलता है. ऑलराइट. इसकी ये मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है, इसकी डिटेलिंग विल स्टडी फर्दर. ओके. So there are three sources of money supply. Okay. One is central bank, the RBI, the Reserve Bank of India. Okay, it issues notes. Then comes the central government, which issues coins. And then comes the commercial bank, which creates credit. Okay. So now is the procedure for money creation. Let us assume that all the banks receive cash deposits. Okay. Cash deposit क्या होता है? What is cash deposit? I have 6,000 saved as cash. I go to the bank and deposit that cash. That is cash deposit. But these deposits are basically liability. Are basically demand deposits for the bank. Demand deposits क्या होता है? What are demand deposits? I go to the bank, I demand my money, and they have to give me back. डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जब आप डिपॉजिट को डिमांड पर निकाल सकते हो. ओके, दैट इज योर अमाउंट, आप कभी भी उसको निकाल सकते हो. एंड दीज डिमांड डिपॉजिट्स आर अ लाइबिलिटी टू द बैंक. लाइबिलिटी मीन्स बर्डन टू द बैंक, बिकॉज वो उनको वापस करने पड़ते हैं. ऑलराइट. बट जब ये डिमांड डिपॉजिट्स कैश के फॉर्म में बैंक के पास जाते हैं, एक चेक की फॉर्म में होता है, एक ई पेमेंट की फॉर्म में होता है, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो लाइबिलिटी ही होगा. बट व्हेन दीज डिमांड डिपॉजिट्स गो इन द फॉर्म ऑफ कैश, दीज बिकम एसेट फॉर द बैंक. क्योंकि कैश की फॉर्म में आया तो अब बैंक लोन आउट कर सकती है पेमेंट्स को और क्रेडिट क्रिएट कर सकती है. ऑलराइट. सो बैंक के जो हिस्टोरी, सबका पास्ट एक्सपीरियंस होता है और सब लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो बैंक के भी अपने हिस्टोरिकल इवेंट से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस ने ये सीखा कि सब लोग जो हैं एक टाइम पे सारे पैसे निकालने नहीं आएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे आएंगे. लाइक मैं हूँ एंड मेरे साथ 3 और लोग हैं जिन्होंने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाया. ऑलराइट. अब अमाउंट अगर उन्होंने डिपॉजिट करवाया तो वो बाहर भी निकलवाएंगे. ठीक है. बाहर निकलवाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैं और वो 3 लोग हम सारे इकट्ठे ही बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए थे तो निकालने भी इकट्ठे ही चले गए. ऐसा नहीं होगा. मैं कल जाऊंगी, वो परसों जाएंगे, फिर कोई किसी और दिन जाएगा, कोई किसी और दिन जाएगा. ऑलराइट. ऐसा होता है. तो ये हिस्टोरिकल बैंक्स आर वेरी स्मार्ट. ये हिस्टोरिकल इवेंट से उनको इतना पता है कि सब लोग एक टाइम पे पैसे निकालने नहीं आएंगे, वो अब मनी इधर उधर कर सकते हैं, मतलब क्रेडिट पे दे सकते हैं. ठीक है. क्योंकि जब तक कोई तीसरा मांगने आएगा तब तक उनके पास उसकी जितनी अमाउंट आ चुकी होगी. नाउ आरबीआई हैज सम गाइडलाइंस. बैंक्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आरबीआई ने बनाए हुए हैं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट रूल्स. एंड वन ऑफ द रूल इज दैट commercial banks have to keep a certain amount as a reserve for emergency situations. मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व रखना पड़ता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए. ऑलराइट. अब ये इमरजेंसी सिचुएशन जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक्स जो है पैसे एक्सचेंज कर रहे थे, पुराने नोट लेकर हंड्रेड्स और नए नोट दे रहे थे, मतलब हंड्रेड्स और वो वाले दे रहे थे. तो कैसे दे रहे थे? रिजर्व के थ्रू दे रहे थे. ओके.
दे वर गिविंग आउट फ्रॉम देयर रिजर्व, जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा था. ठीक है. अब कुछ इनिशियल्स हैं which we are going to use in the further procedure, which you need to understand it clearly. One is primary deposit, which is called initial deposit. Primary deposit मतलब जो मैंने एक्चुअल में अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, that is primary, that is initial deposit. जैसे मेरे पास 10,000 है, मैंने 10,000 डिपॉजिट कराए हैं, तो that is the initial deposit they are asking for. Okay. Secondary deposit. Secondary deposit is the amount जो लोन पे आई है. लोन, अब 10,000 में से 9,000 लोन पे दिया गया है, मेरे अकाउंट में लोन पे आया, तो लोन पे जो अमाउंट आई है वो सेकेंडरी डिपॉजिट है मेरे अकाउंट में. जो सेकेंडरी डिपॉजिट हुआ है, एक तो 10,000 earlier was my money that I have deposited. Secondary deposit is also my money, but that I have to give back to the bank. All right. Now comes the excess reserve. What is excess reserve? Excess reserve का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? Excess reserve is equal to actual reserve minus cash reserve. Actual reserve is the primary deposit you have, primary initial deposit. Cash reserve is the percentage or the amount that is kept as a reserve separately due to RBI guidelines. Excess reserve is the amount that is going to loan out. All right. Okay. Now we'll start the procedure of credit creation. Suppose I have 10,000. All right. Now suppose I have 10,000 in my hand. Okay. 10,000 का 10% you have to keep it as a reserve. All right. 10,000 का 10% एज अ रिजर्व कितना हो गया? 1,000. बचा हुआ कैसे निकालो? बचा हुआ 90% कहां जाएगा? लोन आउट पे होगा. लोन आउट. ऑल राइट. अब द प्राइमरी डिपॉजिट हियर, deposit is 10,000. All right. This is 10,000. Cash reserve is 1,000. 10% of 10,000 is 1,000. All right. Now comes excess reserve. एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल रिजर्व माइनस कैश रिजर्व, विच इज 10,000 minus 1,000, which is 9,000. So this 9,000, this amount of 9,000 is going to credit out. All right, ये अब लोन पे जाएगी. ओके, सो अब ये जो 9,000 है ये लोन पे गई है. ठीक है, अब बैंक को पता है, बैंक नोज कि उसके पास सिर्फ 10,000 है. बैंक नोज एक्चुअल अमाउंट उसके पास सिर्फ 10,000 है. बट नाउ बाहर जो कस्टमर्स हैं उनको क्या दिख रहा है कि बैंक के पास 10,000 भी है, 10,000 हमने दिए, 9,000 उसने लोन पे दे दिए. तो बैंक के पास टोटल कितना हुआ? 10,000 plus 9,000, 19,000. बैंक के पास सिर्फ 10,000 ही है. बैंक ओनली हैज 10,000. बट बाहर लोगों को क्या दिख रहा है? बैंक हैज 19,000. दिस इज एक्चुअल में फिक्शनल, दिस इज नॉट करेक्ट. ये सिर्फ बाहर लोगों को दिख रहा है, सच्चाई ऐसी नहीं है. सच्चाई में बैंक के पास सिर्फ 10,000 ही है. ओके, नाउ दिस प्रोसीजर कंटिन्यूज.
अभी 19,000 है, 19,000 का 10% निकालेंगे हम. ओके, इसका 10% निकला 1900. अब ये 1900 इसमें से एक्चुअल अमाउंट में से माइनस होगा, जितना एक्चुअली है बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट में से माइनस होगा. ओके, एंड दिस प्रोसीजर इज कंटिन्यू जब तक जीरो नहीं आता है. एक्सेस रिजर्व डजंट बिकम जीरो. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ क्लियरर वे विद द टैबुलर प्रेजेंटेशन. उससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा. ओके, सो स्टेजेस, प्राइमरी डिपॉजिट, कैश रिजर्व, एक्सेस रिजर्व. ओके, स्टेज 1 प्राइमरी डिपॉजिट कितना था? 10,000 था. ऑलराइट, 10,000 का 10% 1000 सब्ट्रैक्ट 9,000. अब ये 9,000 लोन पे जाएगा. नाउ ऐड, बाहर जो कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से 10,000 प्लस 9,000 कितना है बैंक के पास इस टाइम? 19,000. 10% ऑफ 19,000 1900. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. एक्चुअल अमाउंट में से, प्राइमरी डिपॉजिट का एक्चुअल अमाउंट में से ही जाएगा. ये फिक्शनल है, दिस इज नॉट करेक्ट. ये सिर्फ बाहर लोगों को दिख रहा है, असलियत में बैंक के पास सिर्फ 10,000 ही है. सो सब्ट्रैक्ट 8,100. ऑलराइट, 8,100. Stage 3, add 19,000 plus 8,100, 27,100. 10% of 27,100, 2710. Subtract 7,290. ठीक है. अब ये 2710 किस में से सब्ट्रैक्ट हुआ है? इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है. ये किस में से हुआ है? ये भी इसी में से हुआ, बिकॉज एक्चुअल अमाउंट 10,000 ही है बैंक के पास. ये सब सिर्फ कस्टमर्स को बाहर दिख रहा है, एक्चुअल अमाउंट बैंक के पास सिर्फ 10,000 ही है. सो अब ये वाला जो प्रोसीजर है, दिस होल प्रोसीजर इज गोइंग टू कंटिन्यू अंटिल दिस becomes 0 and this becomes the actual primary deposit, which is 10,000. All right, this is going to continue until this becomes 0, actual reserve becomes 0, and cash reserve becomes the primary deposit we already have. Okay, बस इतना ही सिंपल प्रोसीजर है और बहुत इजी प्रोसीजर है अगर आप इसको समझ लें तो. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा.